थैंक यू सो मच चैट यार. आई नो इट्स वेरी पेनफुल. मैं खुद भी बहुत सैड था, लेकिन मुझे ऐसा एक डिसीजन लेना पड़ा बिकॉज मेरे को अभी जाना है, स्टैंड अप करना है थोड़ा सा, और स्टैंड अप लिखना है, और काफ़ी सारे वीडियोस डालने हैं. एंड वो होता है ना थोड़े मेंटल में, कैसे समझाऊं यार, थोड़े दिमाग के अंदर इश्यूज रहते हैं यार. तो मेरी ओवर थिंकिंग होती है, एक थॉट आता है, वो फिर छोड़ता नहीं है तुम्हें जब तक तुम उसको चेंज नहीं करोगे. अभी मैं फनी वे में बोल रहा हूँ, बट दीज आर एक्चुअली वेरी सीरियस थिंग्स दैट हैपन टू मी एट नाइट. आई ओवर थिंक एंड आई इट हैज़ बीन अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ फॉर अ while now, if you have noticed or if you have not. But I really want to go do some stand up, kill it, feel good, and streaming, whenever I can, I shall be back. But I think Samay, what is happening is chess has loved you a lot, has given you a lot of love, and comedy एक ऐसा है कि आप उसके पीछे भाग रहे हो. Well, chess is saying like Samay, आ जाओ. So you are, it's not easy for you. Where you started with your background, वो start stream का जो आता है वगैरह, like you tell me now. So this was the first event. I think the main thing was you loved to make events. जैसे comedians on board, you started with कि कुछ करेंगे. You wanted an event. Yeah, I have such a big network. Might as well, bring everyone together, play chess. Let's see how it goes. I love chess. If it turns out great, it'll be awesome. And it turned out awesome, dude. Yeah. All of these guys were first of all so sweet to just help me. All and big moment, yeah, for your. And then began this vision कि भाई अब ये छोड़ना नहीं है, अब इसको बस करते जाना है. And then one thing led to the another, bro. That's honestly, that's why whenever someone says ना, Samay, you have done so much for chess, you have done so much. मेरे पास हमेशा से विजन था कि भाई ये करेंगे, पर I had never. It is just fate यार. मेरे को कभी लगा नहीं था ये सब हो जाएगा. I had not even कि कैसे हुआ मेरे को अभी तक नहीं पता यार. I would honestly take that कि Samay you have done. If I would have sat on day one and planned कि भाई chess scene को बदलेंगे, मेरा कुछ प्लान ही नहीं था. I used to play chess, I used to love chess, कुछ प्लान नहीं था. प्लान बना बाद में, जब ये सब हुआ, जब हमने वन नेशंस कप किया साथ में, तब जाके हुआ कि भाई अब चेस को प्रमोट करेंगे. तो तब तक कुछ था ही नहीं. तब तक इट वाज जस्ट मी गेटिंग अम्यूज्ड बाय ये सब क्या हो रहा है भाई. ये हेडमेटर आ रहा है, विदित गुजराती आ रहा है, अरे विश्व नो विल कम टू देम. बट अगाड़ मैटर से आप सीख रहे थे ना, like you used to watch his videos for so many years. All of us. मैं विश्वा उपमन्यु was the biggest fan. And he's coming on your stream. Just it must have felt very nice. It felt crazy. We lost. हम लोग ने ग्रुप बनाया यार. Road to Carlson was the name of the group, which I recently deleted. We had made a fun group, and the name was Road to Carlson. Me, Abhishek Upmanyu, Biswa, Vaibhav Sethia, and the first comment was ha by I think Vaibhav Sethia कि ये क्या गोल है, ये कभी नहीं होने वाला. And just for the viewers, I was going to show that anyway, but this actually happened. With Carlson. Now the name is changed to Road to Bobby Fischer. अरे impossible aim क्या रखेंगे? वो लेंगे ना ऊर्जा बोर्ड. And then Vidit bhai, I would have loved if Vidit bhai was here, but I think he's busy with something. Yeah. मतलब कैसे, like your chemistry and you see your friendship is so amazing. How did this happen? I think if not for Vidit, I think Vidit played one of the most important roles, in the streaming thing. Otherwise, it was just a combination of all of us. Yeah, this chess boom that has happened. It's not one person can't do it. I started it. I agree. I did whatever but it would have gone nowhere without all of you. विदित, जब मैं विदित को मिला ना, जब मैं when I realized कि ऐसा एक ग्रैंड मास्टर है who's so good at chess, but he's also just another guy. Like he's like another friend I have in college. He's just another guy who can just destroy 1 billion people in chess, and he's just cool about it. He's like if I had that level of skill, I would not even look at other people. I would like तुम लोग को आंखें बंद करके हरा सकता हूँ मैं 10 लोग को. तुम क्या हो भाई? This guy is like, he's a genius, and he's just like क्या कल खाएंगे नाशिक में आम चूसेंगे, and he's just doing normal stuff like everyone does. आम चूस रहा है, मिसल पाव खा रहा है. So I'm like,
and he was funny. He used to understand. He used to watch stand up. He was a fan of comic stand, so it was like a mutual thing. So suddenly I was like, भाई chess player cool है, chess player cool है, जनता ready है, फटाफट हो जाए. फिर with it instantly became a crowd favorite. जलवा है हमारा. Like I had become in Tanmay's stream, Vidit became in my stream. It always happens. This is how it goes ahead. Like how Raja has now become in Vidit's stream. Tomorrow Raja will become even big. He'll get someone and someone will become favorite in his stream. They'll be like, call this guy, call this guy. Now wherever Vidit streams, call Raja, call Raja, call Raja. So now when Raja will get someone, it'll be like, so it will keep, people will start loving more people. So he was instantly likable by the audience. Yeah. And that just हमारी chemistry बन गई एक मेरे और Vidit की एक. Again we found characters that are there. बस एक दूसरे की थोड़ा ले लो हंसी मजाक में, अरे GF reveal, अरे बाय बाय, ये सब वो सब. And it was the most beautiful thing. Amazing. अरे क्या इवेंट किया था. अरे इससे पहले मेन चीज तो आप भूल गए भाई. सागर शाह वाला फ्रेम कहाँ है भाई? आपके बिना तो क्या ही है भाई, कुछ नहीं है आपके बिना. मैंने एक डाला था. I have put this one. ये है भाई, ये चीज जो हुई है. This is the revolution of chess. I don't know, somehow unbelievable. Today we did this episode 92 भाई. पता है मैंने जब आपसे मेरा पहला मैसेज विदित को था, भाई सागर शाह बंदा कैसा है, बिफोर यू ऐड का, इज लाइक ही इज टू सिंपल. पीपल कॉल हिम सादा डोसा. You remember? Yeah, you had told sada dosa, and then people started calling me masala dosa. They were like, तुम सादा डोसा नहीं तो मसाला डोसा. And I just, when I met you guys, now I realized कि ये क्या दुनिया है भाई. You guys are so awesome. You guys are so talented, and you guys are so chill. And I loved hanging out with you guys online. I can tell you one simple thing. When I saw what you were doing, for me it was like, I'm trying my best to popularize chess, to bring people to chess, and here is someone who is bringing so many people into chess. How is he doing this? And you know, I wrote one article on you and Vidit playing that game, analysis and all, and I was wondering ki kya, and I used to watch the stream and essay, and it's I still can't believe that so many people are following chess. I can't believe, bro. I can't believe it, man. I still think it's a dream. I still don't know how it happened. It just happened. Yeah. It was like, I'm an entertainer. I know how to put a show on. Vidit is a genius. You have the entire. You are the wise guy. You are the brains behind everything. You can get things done. You can get contacts. You can call guests. So it was a combination of everything. समझ रहे हो? जैसे अगर विदित नहीं होता, अगर आप नहीं होते तो चेस कमेंट्री में मजा नहीं आता. अगर विदित नहीं होता तो चेस देखने में मजा नहीं आता उस लेवल का. अगर हम लोग नहीं होते तो हम लोग कुछ बवासीर नहीं करते. तो मे बी बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आर नूब्स लाइक अस, नो, इन चेस. उनकी रेटिंग भी 1200 है. मोस्ट ऑडियंस की रेटिंग 800 से 1200 हमारी रेटिंग में. तो दे वुडंट बी एबल टू रिलेट अगर सिर्फ विदित कर रहा होता. तो इट वाज, हम तीनों ने एक दूसरे की कमियां पूरी कर दी बेसिकली. एंड जस्ट people started enjoying the perfect package. Yeah. And now so many people are streaming, and that's so amazing. And this Chess for Charity. Look at this frame. No, look at this frame. There is Samay, Vidit, Tanya, Yuzvendra, Raftar, Krishna, right? वो जो पीछे है. Botes, me, Anish, Mortal, Scout. Yeah, Bhutwala. There is so many. Rahul Subramaniam is there. Kaniz, Vaibhav, Biswa, Tanmay. Varun is there. Varun Kusha. I mean, look at so many stars playing Raghav chess. Jiwal is there. Yeah, they all had a great time in Chess for Charity 1. And the best part was that chess के साथ ना एक nobility जुड़ी है, which is not there with any other game. Yeah, you agree to that? Yes. Chess is a noble game. I don't know what it is about it, but it's there's nobility with it. So with such noble sport, I thought you can do something. Like I have a feeling कि अगर मैंने PUBG खेल के ये किया होता, इतना पैसा नहीं बनता. This much money we could never raise for these so many reasons. This idea only was so mind blowing for me कि हम लोग कुछ नहीं भाई, हम लोग एक लैपटॉप पे बैठे हैं, कहीं हिल नहीं रहे हैं. मैं कच्छा पहन के बैठा हूँ, ये पर्दा है पीछे, और हम लोग किसी गरीब का पेट भर रहे हैं. This concept is still incredible for me. Yeah.
कुछ नहीं है भाई, ये एक माइक है जो चलता नहीं है कभी, घर पे 2 बंदे बैठे हैं एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, और बाहर कोई लोग बंदा आज घर पे खाना खा सकता है. It's insane. Amazing. And look at what happened, yeah, because of that. I think this was your proudest moment. Yeah, this is hands down the proudest. My dad and mom, there was my mom that cried on the TV. My dad, he was taking photos like this, ऐसे because again dad को चाहिए Instagram traction, तो dad ना ऐसा नहीं कि मेरे को बाद में बोले स्क्रीनशॉट भेजो, नहीं, dad ऐसा फोन से फोटो खींच के my son with Vishwanathan Anand. Yeah, and I remember you were like, my father is so amazed, like, क्या किया, हरा दिया? Of course हरा दिया यार, विश्वनाथन आनंद ने of course हरा दिया हमको. Too good. And then you come up with such interesting ideas, like people do memberships on their channel to raise money, like to have money for themselves. You said that there will be one segment which is Ambani OP, जिसमें सारे पैसे will go to sort of charitable cause every month. ये idea कहाँ से आया? जब YouTube में membership खोली, see, I have my own bills, okay, honestly if I tell you, बहुत खर्चे हैं. So many basically things I have to do. Sometimes to buy gifts for some people. I have to also save money for my own thing because this is my job. So memberships was always like it's another thing that helps a creator to earn money for themselves. Because आपको पता है कि super chat से उतना नहीं होता है, right? तो वो तो था ही. But I was like, I honestly think 7,000 रुपए मैं किसी बंदे से हर महीने लूं. I don't deserve that money. मैं क्या करूं यार? I don't think I am worth that money. That कि कोई मैं उस बंदे से कैसे बात करूं डिस्कॉर्ड पे कि भाई कि तू मुझे हर महीने 7,000 दे, मैं तेरे से मैं ऐसा क्या बात करूंगा उससे, मैं ऐसा क्या उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करूंगा 7,000 रुपए लग, ऐसा कुछ नहीं कर सकता. Instead I thought the best thing to do with that kind of money, that amount of money, that's a lot of money, is to help other people, to create this one thing and to create this community of people कि हम कल को चाहे तो ऐसे किसी की लाइफ सुधार सकते हैं. Amazing. हर महीने. Dude, आज की डेट है कि हमारा इंस्टाग्राम पे ग्रुप फुल हो गया है. This thought आपके अंदर आया कैसे? ये it's such a because memberships is always used for your own. मेरे को घिन आएगी यार, मैं सो नहीं पाऊंगा रात को ये सोच के कि मैं किसी से हर महीने 8,000 रुपए ले रहा हूँ बस उससे बात करने के लिए. मैं नहीं. It's a very nice thought. मैं थूकूंगा खुद पे यार, मैं क्या जवाब दूंगा यार मरने के बाद किसको देना. My conscience will not let me be if I take 8,000 rupees from everyone, somebody, especially from, let's say, there are always these young kids, who are very enthused. समय भाई से बात करेंगे. I do not want to cheat you like that. I don't want to be that guy. समझ रहे हो आप? I have my bills, but not इतना भी नहीं है मेरा कुछ कि भाई मैं तुमसे 8,000 रुपए लूं और फिर क्या करूं, बवासीर करूं. बाबा मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला. I think the biggest, I have not put in every match, but the finals where 68,000 people watched it, more than 68,000, and India became the joint winners with Russia, gold medal. How was that feeling, this entire journey? Oh man, it was so insane. This was, इतने लोग देख रहे थे यार, एक्सपेक्ट नहीं किया था सागर भाई, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था यार. 68,000 people watching chess, supporting India. भाई पावर देख रहे थे आप उस दिन. ऐसे हमने ट्रेंड करा दिया था कुछ, ऐसे निहाल सरीन ट्रेंड हो गया था. इतने 68,000 people just can do इतना. वो बंदे का ईमेल क्रैश हो गया था यार. ईमेल क्रैश हो गया था. हम लोग जाके फीडे की वेबसाइट क्रैश कर दी थी हम लोगों ने. तो द सपोर्ट वाज सो इनक्रेडिबल. एमएल सुटोस्की आ गया है हम लोग को हमारा स्ट्रीम पे. एमएल सुटोस्की आ गया है और ऑफिशियली अनाउंस कर रहा है हमारे स्ट्रीम पे रिजल्ट अर्मेनिया और इंडिया का. ये देखो, और एमएल सुटोस्की का ट्वीट, FIDE would throw its weight behind every dedicated project promoting chess. I really see an impact Samay has on Indian audience. And guys, Emil Sutovsky is FIDE, जो World Chess Body है, उनके Director General है. And he says this. You must have felt
unreal. Yeah, like I felt too great. because I was like, until now you had love from the viewers, but yeah, here now I had, is like, credibility. like from FIDE, the one of the top guys in FIDE. अबे ऐसा हो गया है कि चेस ऐसा हो गया कि चेस का ऐप नहीं होता तो सीधा chess.com में कॉल हो जाता है. ये कुछ होता है तो डायरेक्ट एमएल सुटोस्की से बात हो जाती है भाई टूर्नामेंट के बारे में. कुछ स्पॉन्सरशिप चाहिए तो डायरेक्ट महिंद्रा. अरे 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 ये क्या लाइफ है यार सागर शाह, कभी नहीं सोचा था यार. ये देखो जिनका नाम बोला आनंद महिंद्रा से कोई तो श्रुत शाह ने लिखा था कि सर हेल्प टू ऑर्गेनाइज इंडियन चेस लीग टू मेक चेस रीच अ न्यू लेवल. तो उन्होंने कहा हैप्पी टू टॉक गोइंग ऑफलाइन. 14th को I'm talking to him. 14th of this after month. tomorrow. After tomorrow is my call with him. That's insane. Amazing. One thing I would like to shout out to, especially to Raftar, to Yuzvendra Chahal, to all these big celebrities who believed in the cause, you know. नहीं तो आराम से they could have just ignored my message. Yeah. But they came, and because they came, so many people came. So everyone who has ever come to my stream in the initial days, big thank you to you, those guys, man. Like they helped a lot. Abhishek Upmanyu. Yeah. And of course Biswa and Vaibhav. Biswa Vaibhav's contribution is unparalleled in this. उनको उतना मैं कभी भी देखता हूँ ना, समय you have done. मेरे को मैं तो ऐसा इन्होंने कम किया है क्या भाई. बिस्वा वैभव ने, बिस्वा वैभव के बिना कुछ नहीं था यार, कुछ नहीं. लोग मेरे लिए नहीं आते क्या शुरू में. उन्होंने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि we will also stream chess? Why did they always? Because their heart is so big. Because Biswa and Vaibhav, especially Vaibhav, बिस्वा तो है, बिस्वा तो बहुत बिजी है, उसके और प्रोजेक्ट्स चल रहे थे. बट these guys, they are so generous. They don't think about all of this यार. They don't think about subscribers. They think about having fun. They think about chilling. They think about following where their heart takes them. And उनको they are the unsung heroes of this revolution. Yeah. Because जनता कभी शुरू में मेरे लिए नहीं आई थी. People came for Biswa and Vaibhav. People stayed for me later. True. So their contribution is unparalleled, unmatched. Biswa Hacker is the most successful chess video on my channel. Yes. I wanted to put this as the final one, getting the world champion on air. One of the biggest achievements. Very difficult to contact Magnus. I mean, I'm getting him again. Acha. This time planning something big. Card chess. Even big. Huh? Card chess. Carlson and Vishy Anand on the same stream. Imagine. Oh. Bye. मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग टू हिम. कल का मैच ड्रॉ हो गया तो मैंने अभी ज्यादा मैसेज नहीं किया उसको. मैंने बोला अभी मूड ऑफ रहेगा भाई का. मैग्नस भाई थोड़ा यू आर टॉकिंग विद हिम ऑन व्हाट्सएप. या थोड़ा व्हाट्सएप पे हो रहा है. एक बार थोड़ा क्या बात है, मतलब काम डाउन हो जाएगा बंदा, फिर बोलेगा भाई. अमेजिंग समय. दिस हैज बीन एन फिनोमिनल जर्नी एंड मतलब चल रहा है अभी. दैट्स द बेस्ट थिंग. सो वी विल वेट. एंड यहाँ पे वो वेट करो इज लाइक एन एक्साइटेड वेट करो, वो वाला नहीं, पेसिमिस्टिक नहीं कि वेट करो, ऐसा नहीं. इट्स लाइक वेट करो और कुछ होने वाला है बढ़िया, और कुछ हो जाए. क्या पता सागर शाह जीएम बन जाए. एंड as always, a big thanks to Sahil for all the pictures and everything that he's contributed to make this stream such a nice one. Thank you, Sagar. You know what? I have been on so many podcasts lately, but never been so comfortable यार. अरे Never. मतलब आज मैं भूल ही गया हम लाइफ में यार. मैं ऐसे खुल गया बस, like just chilling with a friend. Yeah. No, this अब जाके मैंने देखा रहे लोग देख रहे हैं. No, but with you it's always been easy to stream for me also, and I think it's likewise you also, and also when I'm with Vidit, you are with Vidit. When I'm with only you, or when I'm with only you and Vidit, I'm this comfortable. But जब ज़्यादा grandmaster आते हैं ना तो मेरे अंदर कहीं हो जाता है कि मैं किसको टोक तो नहीं रहा. I hope I'm not interrupting anyone. अब आपके साथ कैसे, आपको टोक भी दिया तो अभी वो वाला एक रिश्ता बन गया है, कुछ भी हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुले में बात कर रहे हैं. पर बाकी लोगों के साथ अभी भी थोड़ा सा उतना खुला नहीं हूं ना मैं, तो ऐसे लगता है कि इट माइट बी रूड. मैग्नस के साथ तो आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो काफी खुल गए हो अभी. बाय द वे लोग चैट कह रही है GF reveal hand is there but cannot see her, so everyone is saying GF reveal. भाई वो GF नहीं है यार. जूम इन करो जरा हाथ पे.